हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम आगे +2 में सिलेबस को कर रहे हैं। इसमें इंटीग्रल चैप्टर हमारा चल रहा है। इंटीग्रल पर हमने 25 लेक्चर दे दिए हैं। ये 26वां लेक्चर है, 26वां लेक्चर ऑन इंटीग्रल ही, 7th चैप्टर। बट नाउ डेफिनिट इंटीग्रल गोइंग ऑन एंड एक्सरसाइज 7.10 up to 7.9 done. Okay, now 7.10 NCERT book, question number 4 to 8. Okay, today now using properties I told in the last video, all properties 6-7 properties are there. You have remember that. You can see the last video to remember that all property discussed in the last video. Now here directly we have to use. Now question number 4 from NCERT book, exercise 7.10 is cos power 5x divided by sin power 5x plus cos power 5x dx under the limit 0 to pi by 2. Now here it is let I and use the property 0 to a fx dx integral is equal to 0 to a f of a minus x dx, f a minus x. तो f a minus x यानी x के प्लेस पर pi by 2 minus x we have to put. So this will be equal to, using the property, okay, then it will be cos of a minus x means pi by 2 minus x instead x and power 5, okay, upon denominator also sin power 5 and a minus x pi by 2 minus x, this plus cos power 5 and pi by 2 minus x instead x. Okay, now this simplify cos pi by 2 minus theta sin theta. So sin theta means x and power 5 upon into dx as it is, into dx. Okay, integral as it is 0 to pi by 2. Now this sin 90 minus x cos x, cos 90 minus x sin x, तो दोनों sin x cos x, तो cos power 5x plus cos 90 minus x sin x, then sin this. Okay beta. Now after that this I and this equal to this I both added, add both, what will come, 2I is equal, denominator same, then LCM same, sin power 5x plus and numerator same by taking LCM, this integral 0 to pi by 2, then this same cancel 1 dx, the integral
0 to pi by 2 1 into dx. Integral of 1 dx is x and limit 0 to pi by 2. Simplify, then 2I equal to upper limit minus lower limit. So pi by 2 minus 0. Then I equal to divide by 2, then pi by 4. Okay, same question. Now, next question we can do 100. Question next, question number 5. What is this? इसमें क्या है? मॉडुलस फंक्शन है. तो मॉडुलस फंक्शंस को सॉल्व करना होता है. एक बार जो मॉडुलस के अंदर है उसको लेस देन 0 ले लो, x प्लस 2 लेस देन 0, और एक बार जो मॉडुलस के अंदर होता है उसको ग्रेटर देन 0 ले लो. तो ग्रेटर देन 0 पर x ग्रेटर देन माइनस 2 हो गया और लेस देन 0 पर x लेस देन माइनस 2. तो माइनस 2 से लेस एंड माइनस 2 से ग्रेटर. तो फर्स्ट केस के लिए लेस देन माइनस 2, तो लेस देन माइनस 2 मीन्स यहाँ माइनस 5 है लिमिट. ओके, x वैल्यू अंडरस्टैंड दीज. ठीक है, तो माइनस 2 विल बी बिटवीन दीज. एज वी कैन से कि माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन हो गया माइनस 5 एंड माइनस 2 लेस देन 5. तो ये C हो गया, C ग्रेटर देन ये A एंड लेस देन B. ओके, अंडरस्टैंड दिस. तो दिस मीन्स हियर ब्रैकेट ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन अंडर द by the property A to B fx dx is equal to A to C fx dx plus C to B. So between is C, so minus 2. So this limit will change in the two part, minus 5 to minus 2. C is this fx dx. तो मॉडुलस जब ये नेगेटिव है यहाँ पर लेस देन है तो इसकी मॉडुलस की वैल्यू क्या बनेगी? सो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, यानी ये नेगेटिव है तो क्या बन गया? नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, माइनस एक्स माइनस 2. दिस विल बी मॉडुलस वैल्यू. ओके, तो देन दिस मॉडुलस विल बी सॉल्व एट दिस फर्स्ट केस. This will be minus x minus 2. If it is less than 0, नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मॉडुलस सॉल्व हो गया. ओके, दिस dx, अंडरस्टैंड दिस फंक्शन मॉडुलस सॉल्व्ड अंडर दिस लिमिट लेस देन माइनस 2, x लेस देन माइनस 2. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट प्लस property using that C is minus 2, C to B is 5. Okay, and this now greater than 0 x plus 2, यानी modulus of x plus 2 will be as it is because x plus 2 is positive. So modulus of positive is positive. So x plus 2 modulus will be x plus 2 because x plus 2 is greater than 0 under this. Okay, then here it will be as it is x plus 2. Modulus solve हो गया and into dx. This. Then very important question. Okay, important. Then easy solve minus x का इंटीग्रल. माइनस बाहर ले सकते हैं दोनों से, ठीक है, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 2 का इंटीग्रल 2x. ओके बेटा, दिस minus this I taken out, then this integral done, limit minus 5 to
-2, अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लस इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x integral of 2 this and limit -2 to 5. Okay, now integral done. Now upper limit minus lower limit. तो अपर लिमिट -2 है, यहाँ पर माइनस बाहर है, इसको ऐसे ही रहने दो अभी बाहर। अपर लिमिट पुट कर दो -2, x की वैल्यू -2, तो -2 स्क्वायर 4/2 देन 2 प्लस -2 इंटू +2 -4, तो -4 वी कैन राइट डायरेक्ट 2 -4. ओके बेटा, दिस अपर लिमिट आई पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -5 पुटिंग x वैल्यू -5, तो -5 स्क्वायर 25, तो 25/2. ओके, and then x value -5, तो -5 to the -10, upper limit minus lower limit, this done, and plus similarly this upper limit 5 putting 5 square 25. Okay beta, 25/2 plus 5 to the 10, upper limit this minus lower limit. Okay, minus lower limit is -2, then -2 putting x value, तो -2 square 4/2 then 2 and -2 to the -4. This now be careful, minus from whole out, -2 this, and this is inside solving LCM, and minus out, inside is the LCM 2. Okay, then 25 minus 20, then 5/2. Okay, 5/2 done. Okay beta, now this minus this, okay, plus now this solving, this is same, 2 times 20, 20 and 25, 45/2, and minus this inside also minus 2 minus 4 is -2 and minus then +2. This we can solve. Now this outside is minus, but inside we are solving. What is this? See here, 2 LCM, then 2 to the 4, -4 and -5, -9 and minus +9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस आउटसाइड है. ओके, देन आफ्टर दैट प्लस दीज बोथ 2 to the 4, 45 plus 4, 45 plus 4, 49/2. Then simplify both. It is positive, negative, it is positive, LCM is 2. The both positive add हो गए, 49 plus 9, 49 plus 9, 58/2. Then simplify by 2. Okay, 2 to the 4, 118, 2 9 18, 29 is the answer. Okay beta, like this we can do important question, modulus function. ये important thing, जो भी इनसाइड मॉडुलस है, एक बार लेस देन 0 ले लो, एक बार ग्रेटर देन 0, वो c की वैल्यू हो जाएगी -2, एंड जब नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ नेगेटिव, इफ इनसाइड नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है, और इफ इनसाइड पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 देन एज इट इज रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इंटीग्रल अंडर द लिमिट 2 to 8 मॉडुलस ऑफ x -5 dx. तो ये भी मॉडुलस क्वेश्चन है, तो इसमें भी उसी टाइप से करना है कि जो इनसाइड है मॉडुलस के x -5, एक बार लेस देन 0 इफ. ओके बेटा,
देन ये लेस देन 0 है तो x की वैल्यू क्या बन गई, लेस देन 5, -5 उधर चला गया, दिस, ओके। देन if second condition, if x -5 greater than 0, then x will be greater than 5. Okay, so less than 5, greater than 5. So this integral breaks into two integral, sum of 2, 2 to 5. C is 5 here, okay, in between 2 and 8, okay. So 2 to 5, and then modulus x minus 5. What will be in this case? Modulus x minus 5 value will be equal to, because x minus 5 less than 0 means negative, तो मॉडुलस ऑफ नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है इनसाइड, तो माइनस एक्स प्लस 5, माइनस माइनस प्लस दिस, so then this integral of fx is minus x plus 5. Under this limit, function changed modulus into this minus x plus 5, okay, plus under the limit greater than 5 means 5 to 8. What will be function? X minus 5 greater than 0 means positive, then positive का मॉडुलस एज इट इज पॉजिटिव रहता है, तो एज इट इज x minus 5 modulus finish dx. So first finishing the modulus like this, okay, these two cases. Now ठीक है, solution is this integral, take here under the limit 2 to 5, तो माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस 5 का इंटीग्रल 5x, सेपरेट टर्म वाइज एंड लिमिट 2 to 5, ओके, प्लस x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस 5 का इंटीग्रल 5x and limit 5 to 8. Understand this thing. Done. Clear? This clear? Yes. Now only upper limit minus lower limit. तो upper limit आपकी 5 पुट किया तो 5 स्क्वायर 25, तो माइनस एज इट इज 25 अपॉन 2 प्लस 5 5 are 25, ये 5 पुट किया x की वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 2, 2 स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 मीन्स 2 माइनस 2 एंड 2 5 जा 10 प्लस 10. Understand what put here, x value 2, done. Then plus this upper limit here 8, तो 8 square 64 divided by 2 32 minus 8 5 जा 40, upper limit minus lower limit, lower is 5 square 25 upon 2 minus 5 5 जा 25. Now simplify this, taking LCM, what will come? 2 LCM, to 25 2 जा 50, 50 minus 25, then 25. Solved. Minus out inside, प्लस के 8 माइनस 2 प्लस 10 प्लस 8 माइनस बाहर तो माइनस 8 एंड देन प्लस, सिंप्लीफाई दिस, माइनस 40 प्लस 32 तो माइनस 8, देन इट इज माइनस 8. नाउ दिस इज माइनस 8 प्लस माइनस माइनस
8, and then simplify inside. 25 to the 50 minus 50 and plus 25 minus के 25 and minus 25 and minus बाहर तो plus 25 upon 2. Again you can check. 25 to the 50 minus 50 plus 25 minus 25 and minus बाहर तो minus minus plus 25 upon 2 LCM. Then this 25 by 2 plus 25 by 2, it is 25, ठीक है, and minus 16. 25 minus 16, simplify, 9. 9 is the answer. Done. Very good question. Similarly, next question. Hello. Next question, beta. Next question number 7 is find the integral of that under the limit 0 to 1. Function is x into 1 minus x whole power n dx. तो ये क्वेश्चन ऐसा है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी? यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी? इंटीग्रल ऑफ 0 to a of function f(x) is equal to integral of अंडर 0 to a f of x के प्लेस पर a minus x. This property we have to use. Now this integral will be equal to under the limit 0 to 1, a is 1, तो 1 minus x, x के प्लेस पर a minus x, ओके, इंटू 1 माइनस a माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस x और माइनस आउट, तो माइनस 1 प्लस x हो जाएगा. ओके, माइनस माइनस प्लस, दिस डन, एंड होल पावर n dx. As it is we have done. तो minus 1 plus 1 cancel. तो simplify this first. It is 0 to 1, 1 minus x into x power n dx. Multiply inside this x power n into 1, x power n and plus x power n into x power 1, तो पावर ऐड हो जाती है, तो x पावर बन गई मल्टीप्लाई में n plus 1, क्लियर, into dx. This question reduced into simplest form, 2 टर्म, दो टर्म वाइज इंटीग्रल. तो इंटीग्रल x पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रल, तो x पावर n plus 1 डिवाइड बाई n plus 1, इंटीग्रल डन, एंड लिमिट अंडर 0 to 1, एंड प्लस इंटीग्रल x पावर n plus 1, x पावर फॉर्मूला इंटीग्रल का पावर फॉर्मूला x प्लस n plus 1 plus 1, n plus 2 डिवाइड बाई n plus 2. डन, इंटीग्रल फॉर्मूला x पावर n का and under the limit 0 to 1. Now simplify, very simple. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट 1, पहले इसमें 1 पुट किया, x की वैल्यू 1 पावर n plus 1, only 1 power any number, that is 1 only, upon n plus 1. अपर लिमिट पुट कर दिया 1, माइनस लोअर लिमिट 0, 0 पावर समथिंग 0, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन एनी नंबर 0, minus 0, upper limit minus lower limit, plus now here upper limit 1, 1 power any number 1 upon n plus 2
minus lower limit 0, then it will be equal LCM n plus 1 into n plus 2, and then n plus 2 and plus n plus 1. Then this will be equal to 2n plus 3 divided by n plus 1 into n plus 2. Answer. Okay, beta? Like this question you can do, simplify. Then next question similar, for last question. Okay, last. Yes, beta. Next question, question number 8. Same property. Which one? 0 to a fx dx is equal to 0 to a integral of f of a minus x dx. So a minus x means pi by 4 minus x के place पर. So we can write this by using property. So we can write this is equal to log of 1 plus tan of x के प्लेस पर a माइनस x, तो पाई बाई 4 minus x, tan of pi by 4 minus x, this dx. Now here use formula tan a minus b का फॉर्मूला. तो क्या बनेगा ये? सिंप्लीफाई फर्स्ट as it is integral and log of 1 plus tan a minus b. तो tan a is pi by 4, tan a minus tan b, then tan x, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. So tan a means pi by 4 into tan b means tan x. This formula using tan a minus b equal tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Use here. Then after that, this one separate LCM inside. Okay. Then LCM inside, so what will come? Simplify this. So then log of, in the bracket, LCM में 1 plus tan pi by 4 की वैल्यू 1, tan pi by 4 1, तो 1 into tan x, तो 1 plus tan x. This and plus as it is this LCM same plus tan pi by 4 1 minus tan x 1 minus tan x, okay, and whole LCM is 1 plus tan x. Okay, clear? Now this you simplify, minus tan x plus tan x cancel, then it is integral of 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 2 log of 2 upon 1 plus tan x dx. Now log m upon n का फॉर्मूला. What is log m upon n is equal to log m minus
log n. Using this formula, then what will come this? 0 to pi by 4 log of m is 2 log 2 minus log n is 1 plus 10x integral 0 to pi by 4. This is I. Question same repeat हो गया log 1 plus 10x log 1 plus 10x. तो let this is I. तो I going on. So this is again here I equal to this. Okay beta. Then if you put here integral of log 2, integral of log 2 is constant. So constant into dx, then constant into x. So x into log 2 under the limit 0 to pi by 4. Integral done, and this is minus I again and I this. So minus I will come this side, 2I is equal to, because this is repeated. Again question, log 1 plus 10x, log 1 plus 10x under the limit 0 to pi by 4. So this is I. So I will come this side, 2I is equal to upper limit x pi by 4. So pi by 4 log 2 minus 0. 0 into log 2 0. Then 2 से divide किया, then I equal divide by 2, then pi by 8 log 2. This is your answer. Okay. I हमने माना था ये I बन गया pi by 8 log 2. Done. Important question. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, and please share the video to that student who are studying in +2 in your contact, your friend, your relative, and guide them. They must send the video to their friends who are studying in +2. Okay, and guide them. They must subscribe the channel. Subscribe the channel and they will get all videos, all lectures, all exercises, NCERT solution automatically in their device, on their device, because I will give the link in the description. So first you subscribe the channel and then you will get everything. Okay, thank you.